हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ LiveFearless। सोचो अगर कोविड में अपनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती तो हम कितने बोर हो जाते। मतलब मुझे लगता है हम सब ने कोविड सिर्फ इसीलिए सर्वाइव किया है क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँची है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन डेटिंग। पर काश ऑनलाइन डेटिंग भी ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ही एक्साइटिंग और सेफ होती। आपने वो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखी है टिंडलर स्विंडलर, जहाँ पे वो एक इंसान ही फ्लीसेस सो मेनी women. So today I'm going to share with you some tips for safe online dating. So let's begin. So the first most important tip is please go at your own pace. You know, I can understand कि आप बहुत excited हो, आपको उस person से जल्दी मिलना है, but it is very important कि आप पहले safety पे ध्यान दें and then you actually control your excitement. So inconsistent bios, you know, incomplete profile pictures जहाँ पे आपको sure ना लगे कि ये person शायद अलग अलग photos में अलग अलग दिख रहा है. You have to be careful. You can also go and check out that person on other social media sites and see and try and reconfirm if it's the same person. One tip that you can do is, you can have a call or you can actually have a video call to confirm that the person that you're talking online and the person that you're actually going to meet in person is the same. Tip number 2. मोस्टली ना हमें आदत होती है कि जो ऑनलाइन प्रोफाइल्स होते हैं वो थोड़े एग्जैजरेटेड होते हैं. सो द पर्सन इन रियलिटी एंड द पर्सन दैट यू सी ऑनलाइन आर वेरी डिफरेंट. सो आप एक काम कर सकते हैं, यू शुड एक्चुअली आस्क दैट पर्सन एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू आस्क, about himself, about the place he is from, about where he is working, what he is doing in life. And trust me, no question is not a good question to ask. So जब तक आप कन्विंस ना हो कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हो वो वही इंसान है जिससे आप मिलना चाहते हो, you can ask as many questions. There's nothing that you cannot ask somebody that you want to meet because it's a question of your safety. Okay, tip number 3. As girls, we need to be a lot more careful than boys. So what you can actually do is आप ना अपना कोई nickname use कर सकते हो dating sites पे. So try and avoid using your actual name because you do not want to risk कि कोई आपको बाकी sites पे trace कर ले या आपको stalk करे. So always try and use a nickname on your dating sites. So tip number 4. Always meet at a public place and not a private place, and always use your own transportation. ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी जगह मिले जहाँ आप comfortable feel करो, जो आपको familiar हो, जहाँ आप पहले जा चुके हो, not a place that the person decides. So you can always request the person that you would be more comfortable meeting in a place of your choice and somewhere that you've been before. So tip number 5. जब भी आप डेट पे जा रहे हो, प्लीज़ इंश्योर कि आपकी किसी क्लोज फ्रेंड को पता है आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो और आप कब जा रहे हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप समबडी इन्फॉर्म्ड अबाउट वेयर यू आर गोइंग टू बी. आप लोकेशन पे जाके पिन ड्रॉप कर सकते हो so that that person knows where exactly you are. And as a small precautionary thing, you can actually ask your friend to call you after say 40-45 minutes. And you could have a code language on, her decoding if you're safe or not safe. Okay, tip number 6. Always ensure that your first date is a coffee date and does not involve alcohol. You can always have alcohol on your second or third date after you're sure of the person, that you're meeting. Also, in your second or third date, even when the whole relationship is new, please ensure that you do not leave your drink unattended. Always ensure that you are around when the drink is on the table, and if you have to leave the table, either you finish your drink or you can order for a new drink later. Tip number 7. So if you feel uncomfortable in the middle of the date, it is perfectly fine to call the date short and walk away. It is very important कि आपको वहाँ पे comfortable feel हो, and if you're not feeling comfortable, which means there's something wrong. So I do not think it's rude if you tell somebody that you would want to make a move and you don't want to hang around too longer. If it's a question of your safety, please cut the date short and walk away. Tip number 8. Always appear confident. Have you heard of the phrase
फेक इट टिल यू मेक इट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले इंसान को कॉन्फिडेंट लगो। अगर आप थोड़े शेकी लग रहे हो या आप नर्वस लग रहे हो तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर अनदर पर्सन टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। सो प्लीज़ एंश्योर दैट यू कम अक्रॉस एज बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी श्योर ऑफ वॉट यू आर डूइंग। टिप नंबर 9, डू नॉट अपियर ओवरली ईगर। आप शायद किसी से मिले और आपको वो इंसान बहुत पसंद आए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट डेट में ये ना दिखाओ, क्योंकि इट्स क्वाइट ईजी फॉर समबडी टू टेक एडवांटेज व्हेन यू कम अक्रॉस एज वल्नरेबल। इसलिए आपको जितना भी अंदर से लगे कि आप ईगर हो, कभी इंश्योर करो कि आप किसी को दिखाएं नहीं। टिप नंबर 10, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिलने से पहले आपके इंटेंशंस क्लियर कर दो, whether you are interested in a casual relationship, whether you are interested in a serious relationship, because it shouldn't happen that you guys meet and then there is a difference of opinion and then things become a little difficult or a little awkward. So always ensure that you have this conversation before you meet in terms of what either one of y'all are looking for in the relationship. Tip number 11, any pushy conversations or any sexually explicit conversations too early in a relationship are a red flag. तो अगर कोई ऐसे conversations है जिससे आपको uncomfortable feel हो रहा हो, तो you really need to avoid going on that date till you are absolutely sure of that person. And the final tip, go by your gut instinct. We women can actually get a gut feeling on what is happening. तो अगर आपको कोई भी doubt है, if you have any sort of gut feeling that this is not going right, please listen to it, please believe in it, and please take the next steps very carefully. I hope you really enjoyed this video. Do like, share and subscribe to my channel LiveFearless Official. If you have any comments, please put them below and I would be happy to answer them. You can also follow me on my Instagram account LiveFearless Official. Until then, live fearless.